Anam Pando is basically a 2014-19 batch of MSc Integrated Economics at Sri Mata Vaishno Devi University, right? And if I remember it rightly, that you are a pass out of Presentation Convent, and then you joined SJM, that is Shailesh J. Mehta School of Management at IIT Bombay, and you are pursuing PhD right now. So, given this, the first question which comes to my mind is that what are the things which you did say after your post graduation from SMVDU and till how you entered IIT Bombay? क्योंकि मुझे दो तीन चीजें बहुत क्लियरली बताना because it will be also helpful for the aspirants कि how much time it took for you to prepare for say the NET examination, and what was the procedure of applying to SJN, and what are the rounds over there, and how people prepare for it. Well, thank you so much, sir, for having me for this talk. Honestly, my journey hasn't been that interesting, but I'll be very honest because I think a lot of people will be able to relate with me. Uh, because ये 2019 में I passed out, and after that it was after 6 months COVID. So for me वो journey I think बहुत लोग relate करेंगे because it was full of ups and downs. Mhm. So I'll start with the very beginning. I joined Sri Mata Vaishno Devi University for economics program with a different, vision in mind. I thought I'll get acquainted with economics as well as other subjects related to management, and then probably I'll figure out आगे कैसे जाना है. But when I was in, I think my second year, एकदम इकोनॉमिक्स कोर इकोनॉमिक्स बन गया है प्रोग्राम. सो मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बनाना पड़ा. सो I wasn't always the topper of my class, never. Neither I was the brightest student. I was okay, average. Whenever I worked hard, I Above scored well. average, I will like to add because I have also taught your course and I know that you are very, very above average, but yeah, not like topper or The brilliance or something like that. Yeah. so and it was also because I thought पढ़ती हूँ मार्क्स आ जाते हैं तो चल रहा है हिसाब अपना ठीक चल रहा है. But after I graduated, and this because ours was the first batch also, we didn't have any seniors to look forward to, and placements पे भी dependent नहीं थे. So as soon as we graduated, I thought there will be a lot of opportunities. कोई एक pick कर लूँगी. So but हुआ ऐसा कि कुछ नहीं था, and then I started applying everywhere. So now economics इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है या इतना ब्रॉड एरिया है कि आप किस प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग. Mhm. आपको उसको जस्टिफाई करना है. आप एक बिजनेस एनालिस्ट के रोल पे किसी दूसरे से बेटर कैसे हैं जो शायद बीटेक करके आया है, एमबीए एनालिटिक्स में किया है आईटी में जिसमें. सो दैट एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू स्ट्रैटेजी पार्ट, इफ यू वांट टू गेट इनटू बजटिंग पार्ट, तो हर चीज़ को जस्टिफाई करना. So that process was itself so long, and but I somehow cracked the interview for Amazon. So I joined Amazon for a while. Mhm. But then COVID hit, and my office was in Bangalore, and they were wanting me to come down to Bangalore. और वो बहुत peak पे चल रहा था, so I had to leave it within a few months. Then started the journey of sitting and thinking अब क्या करें, और no one, there's no hiring going on. तो वो बहुत problematic situation था. So then it was a very planned decision of mine. I sat down, I was disappointed, nothing is coming in hands, कुछ भी नहीं हो रहा, जितना मैं capable हूँ नहीं मिल रहा. Then it was a very planned decision. I thought अगर if I have studied economics and it has such a large scope, why am I not मैं उसको परस्यू क्यों नहीं कर रही आगे, उसमें से अपना एक फील्ड, क्योंकि मुझे एनर्जी साइड बहुत इंट्रीगिंग लगती थी. सो मैं Mhm. उसमें आगे कुछ करने का अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन क्यों ना दूँ, रादर देन जॉइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और उसमें जस्ट टू फिट इन अ पर्टिकुलर प्रोफाइल में ज्वाइन कर रही हूँ. सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन, ब्रशिंग माई कॉन्सेप्ट्स, बुक्स, सब कुछ लिया. Mhm. आई सैट फॉर नेट एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा था उस दौरान. जब हुआ तो फिर 6-7 महीने उस पोस्टपोन हुआ, देन रिजल्ट्स आने में टुक अ लॉट ऑफ टाइम. But then, because I seriously sat and I seriously started studying, so results were out. I cleared UGC NET, not JRF, but I was able to clear the lecturership. How much time it took for you to prepare for NET examination? So I would say 6 to 8 months. 6 to 8 Six months. to eight Okay. months. Mhm.
दैट टू फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई की थी कॉलेज में सीरियसली. Because you were on the ramp as well as with the guitar. Yes. So I thought marks आ रहे हैं तो चल जाएगा काम, but नहीं चलता है. So then I studied. So I think if someone is regular and is well known with this concepts, so I think they'll take lesser time. 6 to 8 months में हो गया, and then exam happened and exam clear हो गया. In between because exam होने में और result आने में बहुत delay हो गया था, second wave आ गई थी. So that is why I joined Impetus Technologies because बहुत gap आ रहा था बीच में. So now So there Impetus you Technologies. went for a intern. No. I worked as a full-time employee as an Okay. analyst. Hmm. So there I was working with their as a data analyst there, managing their data. But of course, again, it had nothing to do with my economics profile. Hmm. Although of course learning was there, I was learning more softwares, but still I knew what I had in my mind. Hmm. So then after that, exam clear होने के बाद I applied to a few places. I applied to IGIDR because I knew there were certain professors in energy economics who could guide me well. So पहले तो बहुत ज़रूरी है आपको आपका एरिया क्लियर होना एंड आपके एरिया के अकॉर्डिंग who all are the people who are working there जो आपको True. Very true. हाँ तो आप कॉलेज का नाम देकर अप्लाई नहीं करो. आप देखो कि किस प्रोफेसर की प्रोफाइल आपके साथ मैच कर रहे हैं, उनके रिसर्च एरियाज आपके रिसर्च एरियाज के साथ अलाइन हो रहे हैं. सो देयर वर अ फ्यू प्रोफेसर्स जो मुझे सही लगे एंड यहाँ पे भी थे. सो आई अप्लाइड एंड मेरा यहाँ पहले ही क्लियर हो गया. सो आई डिड नॉट सिट फॉर एनी अदर इंटरव्यू. तो इसमें कितने राउंड्स होते हैं? सो यहाँ पे IIT बॉम्बे में 2 स्कूल्स हैं. एक ह्यूमैनिटीज़ का है जहाँ पे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है और एक शैलेश जी मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. सो दोनों के अपने अपने हैं इंटरव्यू प्रोसेसेस. एक जनरली तो ये रहता है कि एंट्रेंस एग्जाम होगा. फर्स्ट दिल शॉर्ट लिस्ट यू बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल एंड वट एवर एग्जाम्स यू क्लियर UGC नेट और गेट and then there is then entrance exam, and after that there is a round of interview. So then they shortlist me. So yes, but the this professor. is something which you are saying and it is very important कि आपको कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूशन नहीं देखना होता है rather than the department as well as the people who are there and whether they fit into your research area or your interest and stuff like that. So that is the only way to go for higher studies. नॉर्मली लोग जो है हायर एजुकेशन को मानते हैं कि बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मैंने क्लियर किया है तो ज़्यादा अच्छा होगा एंड दिस दैट. बट मोर और लेस इट इज ऑलवेज द केस कि आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को परस्यू किया है क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट. क्योंकि वो कहीं भी मिल सकता है. कोई छोटे इंस्टीट्यूशन में भी मिल सकता है और कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में भी मिल सकता है. सो दैट इज क्वाइट अ वेरी राइट थिंग व्हिच यू आर सेइंग. So now since you have joined and you are there for some time, so how is the education as well as the learning process is different, say, and SJM is known for something, right? Because it's not like unknown school, है ना? अगर आप कभी भी किसी को भी बोलोगे कि मैं शैलेश जी मेहता से हूँ तो they will always have something in their minds कि okay, this person knows something. So going to a good school like SJM at IIT Bombay, what kind of मतलब what are the things which comes to your mind कि क्या चीज़ें हैं जो कि ये या एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक से मॉडरेट. Well, differences तो हैं बहुत हैं. अभी honestly it's just been a month जब से मैं आई हूँ, but still I have found a lot of differences. One being from both faculties and students end. यहाँ पे जो students भी आएंगे they come with a lot of expectations and they try to meet expectations first from their own end. Like I sit in a फोकस अच्छा होता है. focus. उनको पता है क्या करना है और वो टीचर को उसी में घुमाते रहेंगे जब तक उनको नहीं मिलेगा what they want. So I sit in a course with MBA students also and I see how already polished, ज़रूरी नहीं है सब already polished होकर आएंगे, but जितना वो they try to gather knowledge, जितना वो टीचर से exploit कर सकते हैं knowledge. और यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है that students are able to choose electives from any given department, whether it's related to their own course or not. MBA वाला अगर उसको डिज़ाइन में इंटरेस्ट आ रहा है वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट से लेगा. वो उसको देखना है उसको आगे जाके क्या करना है उसके साथ या वॉट एवर. सो वो एक फ्रीडम है. सेकेंडली फैकल्टी के एंड से भी ये चीज़ें हैं. देर आर अ लॉट ऑफ फील्ड विजिट्स.
मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फील्ड विजिट्स रहते हैं, हम्म, एंड देन फैकल्टीज अप्लाइड वे से बहुत पढ़ाते हैं. इफ okay, आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, आई एम सिटिंग इन द इकोनॉमिक्स क्लास अगेन. तो वहाँ पे अब वही थ्योरीज पढ़ा रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं, बट it is so different to me. It is so different because now the application part of it I know. सिर्फ एक ग्राफ नहीं बता दिया जैसे हम लर्न कर कर आए थे ग्राफ, तो बट बताया कि अब मुझे अगर इंडस्ट्री में ये ग्राफ अप्लाई करना है तो कैसे चेंजेस आएंगे. बहुत सिंपल सा हमारे इकोनॉमिक्स में सप्लाई डिमांड ग्राफ होता है, हमें पता है क्या है. बट अब मैं पढ़ रही हूँ कोविड को, इससे रिलेट करूँगी कोविड की वैक्सीन्स. सो वो अप्लाइड पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा एक पर्सपेक्टिव दे रहा है. सो आई थिंक दैट इज द मेन डिफरेंस. और जो एनवायरनमेंट होता है स्टूडेंट्स का, बिकॉज इफ़ यू गो टू अ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन तो वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उतने फोकस नहीं होंगे, और ऑब्वियसली उनका जो है मन पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कुछ और चीज़ों में. एंड सिंस यू हैव ऑल्सो बीन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो मुझे नहीं लगता है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्ले अ हिंड्रेंस और पोज अ हिंड्रेंस इन योर एकेडमिक्स, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन एकेडमिक्स के टाइम पे अगर आप एकेडमिक्स नहीं कर रहे हो और एकेडमिक्स को बहुत अच्छे से परस्यू नहीं कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से मज़ा नहीं आता है. एंड एनवायरनमेंट जो कि बच्चे प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज वहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, और उनको पता होता है कि उन्हें कुछ तो करना है, और मतलब दे आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट, तो वो या उसका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता होगा, राइट? बहुत ज़्यादा. यहाँ पे तो हमारे एसएनडीटी में भी बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स फ्रीक्वेंटली होते थे, बट और यहाँ पे और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एवरी अदर डे इट्स वहाँ तो आलियाज एंड रणवीर आर लाइक नॉर्मल. they are always there. Always. So every day something is happening. There are WhatsApp groups हमेशा ping हो रहा है, आज ये है कल वो है. But at night, if I like yesterday night, I took my books, काम करना था, I went to the library. तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी 11 o'clock तक है, बाकी रीडिंग सेक्शन 24/7. So I went there. And there was so many people. I thought ये लोग मस्ती कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे. जब पढ़ाई करना है रात को आ गए बुक्स लेकर, and they are doing their work. और फिर शाम में कहीं गाते नाचते दिखेंगे, तो they are utilizing their time. वो उनका वो वाली अंडरस्टैंडिंग, मतलब ऑल दी आईआईटीज आई गेस सो आर लाइक हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग दैट वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, मतलब वो वर्क हार्ड करना है उनको, उसके बगैर नहीं चलता है. उसके तो वर्क हार्ड तो करने का है ही, उसके साथ साथ आप सारी चीज़ें करें. एंड ऑब्वियसली अगर आप डिस्ट्रैक्शन में बह गए तो देन यू विल बी नॉट अ पास आउट रादर देन अ ड्रॉप आउट, है ना? तो बिकॉज देयर इज सो मेनी थिंग्स टू डिस्ट्रैक्ट यू, है ना? एंड सो मेनी इवेंट्स हैपनिंग एंड दैट टू ऑफ सच हाई लेवल. तो आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए और आपने पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कर ली, तो यू आर गॉन फॉर अ टॉस. वो चीज़ तो है. हाँ, ये बिल्कुल सही है. इनफैक्ट मुझे याद है कि लास्ट टाइम व्हेन आई वाज विजिटिंग, तो जो हमारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब छिछोरे की शूटिंग चल रही थी, तो सुशांत एंड ऑल दीज पीपल ना, दे यूज्ड टू कम ओवर देयर, और बंदे जो है वहाँ पे पागल हो जाते थे उसके चक्कर में. तो मतलब कि अगर कोई उसमें स्वेड अवे हो गया तो डेफिनेटली इट कैन हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो वो चीज़ रहती है. अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दो तरीके के तुम देते हो. मुझे एक चीज़ बता एंड वेरी ऑनेस्टली बता, if a person is pursuing say his or her bachelor's in economics or master's even in economics, what are the probable options which open for him or her say after his graduation or post graduation? मतलब क्या क्या चीज़ें as a senior, because you are also the first batch of SMVDU, तो as a senior you will like to tell कि क्या क्या चीज़ों को pursue किया जा सकता है. So as मैंने स्टार्ट ही से किया था, इकोनॉमिक्स बहुत ब्रॉड है. इट्स अ कंप्लीट आइडिया. इसके अंदर देर आर सो मेनी फील्ड्स. यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, तब तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है इसमें. सो आपको अगर माइक्रो लेवल पे पढ़ना है तो आप उसमें घुस जाइए. इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में आपको मज़ा आ रहा है, आप वो पकड़ लीजिए. यू आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, इसको थ्योरी वे से मत देखो, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स. सो इकोनॉमिक्स का बहुत ब्रॉड एरिया है. अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसीज में मज़ा आ रहा है, सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू जॉब्स इन आरबीआई, इंटर्नशिप्स इन आरबीआई. उसके अलावा रिसर्च इज एन ऑप्शन ऑलवेज. आपको अगर रिसर्च में जाना है, यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग फ्रॉम योर एंड. मैंने रिसर्च ये सोच के आई चोज दैट आई वांटेड टू लर्न मोर अभी तो. एंड इफ आई एम इंटरेस्टेड इन एनर्जी इकोनॉमिक्स, suppose I talk about energy economics, there is a vast
there are so many options available for energy. I can get into private sector organizations that are working with electric vehicles and all that. I can get into think tanks, policy making. I got into IIT because I wanted to do research. तो मैं अभी वो मॉडलिंग करना चाहती हूँ एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी को. इफ somebody is interested in health economics they can get into health insurance consultancies they can. So बहुत वास्ट ऑप्शंस हैं आपके पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में. यू कैन गेट इनटू एज एनालिस्ट्स. आप उनके बजट एनालाइज करो, आप उनकी प्राइसिंग करो. यू कैन गेट इनटू आप क्रेडिट और आप क्रेडिट मार्केट में इंटरेस्टेड है तो आप सेबी वगैरह ये सब ज्वाइन कर लो. सो इकोनॉमिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एरिया है. आप उसमें से चूज करो विच इज़ वेयर यू आर इंटरेस्टेड. आपको कौन सा एरिया बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है एंड आप उस पर देन यू स्टार्ट वर्किंग. हर एरिया में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. बी इट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर्स, autonomous institutions, everywhere there are a lot of options. Acha, because you have also been a person who has maintained the co-curricular as well as the academics balance. तो जैसे कि कभी कभार हमारे बच्चे and this is a very common complaint which I also get to hear from a lot of students कि हम इसमें घुस गए तो उसके कारण से जो है हमारी एकेडमिक्स खराब हो, है ना. या कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता करना. आई वॉज अ सिंगर और आई वॉज अ डांसर और आई रिप्रेजेंटेड माई स्टेट in some judo competition and this and that, but right now I have stopped it completely because पढ़ाई बहुत ज़्यादा है ना. तो दोनों टाइप के बच्चे मिल जाएंगे आपको. कुछ तो को करिकुलर में ज़्यादा बह जाते हैं तो उनकी एकेडमिक्स खराब है, और कुछ लोग डर के मारे कि एकेडमिक्स खराब हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स कर रहे हैं बट दे आर नॉट परस्यूइंग देयर हॉबीज एंड इंटरेस्ट एंड ऑल दिस को करिकुलर एक्टिविटी. तो and since you have been in SMVDU for 5 years and you have ample amount of experience about it and you have managed as well as maintained a very good CGPA as well as say also your co-curricular activities, तो कैसे बैलेंस करते हो तुम लोग? तो मेरा हमेशा से क्लियर था, मेरा एक हॉबी थी और मैं इफ आई डोंट परस्यू दैट आई वोंट बी एबल टू फोकस ऑन माय एकेडमिक्स. तो जब मुझे गाना गाना है तो मैं निकल जाऊंगी हॉस्टल से. पर व्हेन आई नो कि अभी इसके बिना काम नहीं चलेगा, मतलब पढ़ाई करना ज़रूरी है, तो तब आई वॉजंट टू बी फाउंड एनीवेयर इन द कैंपस. तब हॉस्टल में बैठी थी. सो आई थिंक वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप घुस गए हो एक फील्ड में एंड देर इज़ नथिंग एज डिफ़िकल्ट. अगर हमको लगता है कि नहीं होगा हमसे, डेफिनेटली होगा. हमें बस टाइम मैनेज करना है. जब रिसर्जेंस है, कॉन्कॉर्डेंस है, आई एम ऑलवेज देयर, तो मैं नहीं दिखूंगी लाइब्रेरी में. लेकिन जब ज़रूरी नहीं एग्जाम्स, बट जब मुझे लगेगा कि अब पढ़ना है तो फिर सब बोरिया बिस्तर पैक करके यू सिट इन योर रूम लाइब्रेरी. मेरे ख्याल से IIT बॉम्बे वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया और मे बी आई डू नॉट नो मेनी प्लेसेस में इतना बड़ा जो कल्ट फेस्ट ऑर्गेनाइज करता है. पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि कल्ट फेस्ट में जो है लोग बह गए और वहाँ से जो है बच्चे नहीं हो. हर कोई हर चीज़ में पार्टिसिपेट भी करता है, एंजॉय भी करता है, बट देन दे गो बैक एंड स्टडी एज वेल. और मैंने कहीं ना कहीं देखा है, आई गेस सो यू विल आल्सो रिलेट टू इट, दैट अगर हम अपने को-करिकुलर एक्टिविटीज़ खत्म करते हैं अपने, तो मेरे ख्याल से हम पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाएंगे. क्योंकि मतलब कि पढ़ाई लिखाई तभी कर सकते हैं जब हम अपना को-करिकुलर एक्टिविटी में टाइम देकर आए. तो आई गेस सो ये चीज़ अपना परस्यूट ऑफ इंटरेस्ट एंड सो ऑन. I have friends जिन्होंने मन था उनका to pursue their hobby but डरे थे academics ही रखना है. Now they tell me that we regret. We should have utilized that time. So यही time है हम सबका. Utilize that, but when it's not important, तब better focus on your academics also because that is something that will lead you somewhere. But हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा किसी का पैशन कुछ और ही है टोटली, तो फिर तो वो उसमें तो बात ही अलग है. वो तो बात ही अलग होगी. So what is your area of research in this Shailesh Jamaica? So I will be pursuing my research into energy economics, particularly in renewable energy economics. Okay. और वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है कि फर्स्ट यू हैव अ कोर्स वर्क ऑफ 6 months और 1 year? 1 year कोर्स वर्क. कितने क्रेडिट्स करने पड़ते हैं? So for non-MBA students 52 credits है मेरे.
for Okay. MBA students 44, and with that एक तो credits complete होने चाहिए, secondly आपका minimum CGPA रहता है 6.5 और 7 का, वो हाँ, maintain वो तो मेंटेन करना ही हाँ पड़ता है, तो जितना उसके हायर बाद ही स्टडी में जाओगे उतना आपका हायर हाँ सीजीपीए मेंटेन करना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट यू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन और समथिंग लाइक दैट। तो सेमेस्टर एग्जाम्स वी मतलब हैव जैसे कि एंड सेमेस्टर एक एग्जामिनेशन तो हो गए सेमेस्टर कोर्स वर्क के लिए, उसके बाद इज दैट्स देयर इट. समथिंग कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन एज वेल? No, after that, after our first year is complete coursework, then after a few months start your annual progress seminars. तो वो तो अच्छा। APS एंड डू चलेगा. यू हैव टू आल्सो प्रेजेंट सम लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रेजेंटेशंस और समथिंग लाइक दैट? Yes, yes. With every course there are presentations, there are research papers. So वो research अब शुरू हो गया है sort of. एंड हाउ, And एंड वहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है क्या दैट यू हैव टू पब्लिश दिस अमाउंट ऑफ पेपर्स एंड दैट टू इन दीस काइंड ऑफ जर्नल्स बिफोर यू कैन पब्लिश और से सबमिट योर पीएचडी और समथिंग लाइक yes, yes. So minimum we need to have two publications, one in international journal, and then we need to have two conference papers also, दैट? uh, ओके। one national and one international conference paper. ओके। But one good thing that I found here is that professors are not like most of the professors are not focusing on the number of publications. So वो नहीं ये नहीं कहते कि साल में 4 होने चाहिए पेपर्स तुम्हारे. You need to focus on your quality. अगर 2 साल में एक पेपर लिख रहे हो, it has to be a good quality paper. So even I bring a lot of research papers to my professors and they're like नहीं, और बहुत अच्छे journals होते हैं नहीं. They say don't focus on how many publications you'll have. Focus on the quality. So हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। एक चीज और बता, since you have lived a life of graduation and post graduation together, huh? And now you are into the higher echelon, or that is the highest degree which anybody can attain, the PhD. So what is the change which you see in you, like as a student or as a pursue as you are pursuing something? What is the difference which you see when you were a graduate student, say like the first 3 years of your SMBD, then when you became a little bit serious with your studies, and say the next 2 years, and after that you have to take a break a little bit because of COVID and because of all these things and stuff like that, and then you say took that SGM, है ना? तो SGM तक पहुंचते पहुंचते what are the changes which you will say like to pinpoint at कि ये मैं ग्रेजुएशन में थी, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में हुई और उसके बाद पीएचडी में अब ऐसी हो गई? बिल्कुल बहुत distinct changes तो हैं definitely है. क्या क्या है? So when I entered the college as an 18-year-old, so you think सब बहुत easy है, सब तो ऐसे हो जाएगा. So बहुत ही casual थी मैं तो बहुत casual थी और मैं music ही explore करती रही. And then धीरे धीरे I started interacting. One good thing that happened with me was that I didn't मैंने limit नहीं किया अपने आप को. I didn't limit myself to my class only because my classmates were all from Jammu and nearby areas. I had, because of music only, I had friends from different departments who were from different areas. So एक CSC से मैंने SQL सीख लिया बैठे बैठे, एक से कुछ सीख लिया और भी बहुत apart from academics बहुत कुछ सीखा. So with that I started growing and maturing more, and by the end I was in my post graduation. I understood that पढ़ाई के बिना नहीं चलेगा. अभी मैं निकलने वाली हूँ. अब निकलने वाली हूँ. अब सीरियस अब सीरियस हो गया है. तो अब कोई नहीं पूछेगा इसके बाद, बिकॉज व्हेन यू आर इन योर कॉलेज इट इज़ अ वेरी सेफ प्ले ग्राउंड. आप प्ले ग्राउंड में हो, बहुत सेफ है, फेंस्ड है, आपको सब प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं. वंस यू आर आउट देयर आपको छोड़ दिया. अब नाउ ट्राई टू फाइंड योर ओन प्लेस इन दिस वर्ल्ड. सो by the time I was in my PG, I then started applying for conferences. I started applying for different things. तो मैंने एक दो बार represent किया college के, तो फिर I understood थोड़ा सा खुद के दम से करना पड़ेगा. And then again जब मैंने decide किया for PhD, I was very serious. And one thing that I've observed is आप जितना hard work ना sharpness या intelligence मैं बहुत कम believe करती हूँ. I believe that it's all hard work. I have But had sometimes friends. at the time you really have to put that hard work. Does not matter how You have. intelligent and sharp you are. Does not matter. And but if you're hardworking, the results might delay, but they will definitely show up. The results will definitely show up. I've had friends whose CGPA was very low, but when this, and I used to teach them, but when they started working hard, and because I was very casual, ho jayega, their CGPA was far above me. I know CGPA does not define, but then it showed. The results showed. So similarly happened with me in UGC Net. When I started working
Hmm. studying again. Started with the most basic books, and then results showed. When I was serious about my research proposal that I want to research in this field, Hmm. so results showed. Professor ने accept कर लिया. I was the only person from economics background who was chosen here. So I think अब जाके I have realized that you need to be very very serious when it comes to your career, when it comes to your academics or whatever, and then you have a life also, but then seriousness होना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़्यादा है. सही, बहुत ज़्यादा सही। चलते चलते एक क्वेश्चन और है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। Since again, I presume I have seen as well, but maybe we haven't talked, therefore I will say I presume. You have seen a lot of ups and downs in this university, and you have seen it from many areas, I will say. ठीक है ना? So, and I have seen you very sad also at a lot of times in the university, and definitely a very chirpy girl, full of life as well. So, how you manage to become a chirpy girl again after going through so many downs? I think I would say my hobby, my music was my elixir only, I would call it. Hmm. Because when I felt things were not going well, academically also they were not going well. So then I restricted myself. But then I opened up. Let me find a place for myself where I feel happy. And because of that, I started doing well in my academics also. Also, one more thing I had, not because I'm in this interview, and but I had some amazing people. I sat with you a lot of times. I spoke to you. I had a This is something which I'm going to edit. I had so many people to talk to, and I think that is what made brought me back. I was good in academics then, back in academics. I was doing well in music. I associated myself with people who were helping me in a lot of ways. And then, of course, at the end, you're your only helper. So then Yeah. you find आप ढूंढते हो कि आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, आप वो करो और अकेले मैनेज हो जाता है. And then you're back. It's I think, and also once you start doing well in your career or in your academics, you suddenly then start feeling also when you're productive, आप productive हो जाते हो तो आपको फिर मज़ा आने लगता है. Hmm. आप कितना ही टाइम वेस्ट करोगे सैड रह सही के. बात है, सही बात है। I will tell you a very small example. जब मुझे मन किया कि अब मैं वापस से अपने आप को थोड़ा बाहर निकालूं, लोगों से मिलूं, so then I also found a conference that was happening. That was on renewable energy only, electric vehicles. वहीं से 2018 में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था इस एरिया में. सो मैंने अकेले बैठ के, और दैट वाज इन स्टॉकहोम, और वो मतलब मैं अकेले बैठ के मैंने पेपर लिखा है वो, knowing कि पता नहीं क्या होगा, but I wrote and I wrote, talked about the costing and modeling, and I spoke to my sister, will you present with me? So उसने बोला ठीक है. So we both sent the paper. It got accepted. So nobody in the university knew, not even my professors. It got accepted. We both flew to Stockholm. We presented there, and there were people from industry, from electric vehicles. Germany बहुत ज़्यादा excel कर रहा था उस time. So there were so many people. And then I stood on the stage. मैंने बोलना शुरू किया, and everybody took me so seriously. So that was the point. I thought कि okay, we are capable of much more. So वहाँ से मेरा फिर जर्नी शुरू हुआ कि ओके, लेट मी जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ. आई वी कैन बी प्रोडक्टिव इफ वी स्टार्ट वर्किंग. Yeah. वी आर केपेबल ऑफ मच मोर. सो देन आप हो जाता है यार, पता हो है, जा हो जाता हो है। जाता है. हाँ हाँ, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ समझाना बहुत मुश्किल होता है जब आप या तो टाउन पे होते हैं या आप थोड़े से लेस मेच्योर माइंड से होते हैं, क्योंकि यूजुअली एज यू माइट बी ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग दैट व्हेन स्टूडेंट्स आर इन दिस यूनिवर्सिटी एंड द एज ग्रुप टू विच दे बिलोंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल देम कि यार हो जाएगा, है ना, या क्या ही है ना, माय फेवरेट लाइन। लेकिन थोड़ा सा कुछ दिनों के बाद जब वो खुद रियलाइज कर पाते हैं, है ना, तो उसके बाद जब मैं उनसे बात करता हूँ तो दे आर सो चेंज एंड सो डिफरेंट, और साथ में ये भी बोलते हैं कि हाँ सर वो बात सही थी कि हो तो जाता ही हो जाता है. है ना, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बट हाँ जब हो रहा होता है तो उसको एंटर टाइम पे थोड़ा सा प्रिकॉशनरी स्टेप्स अगर लिए होते या थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो तो मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन रहता है। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मुझे। शूट. एंड दिस पार्ट इज समथिंग व्हिच आई क्या बोलता है कि आई, मतलब मैं एकदम आई प्रॉमिस दैट आई कैन एडिट। ये बता, वायु हाउस याद आता है? वायु हाउस.
उसका अलग ही जर्नी है, वो एक अलग ही है सेपरेट। नहीं, मुझे बहुत याद आता है। बट इट इज ट्रू कि एक फेज होता है लाइफ में जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं एवरी फ्रंट पे। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सेट हो ही जाती हैं एंड मोर ओवर यू गेट फोकस्ड, यू आर मैच्योर, बहुत सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं एंड सो ऑन। तो इट्स कूल राइट, वो चीज़ है इंपॉर्टेंट है, वैसे ही करके चलना पड़ता है। Anyways, thank you so much, Anand, for this wonderful session, and we will continue our talks at some other Yes. point of time as well.